Today I am going to discuss all about Ohm's law. It states electric current through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends, provided temperature and some other physical conditions remain the same. Okay. Or V proportional to I. I depend on V but not V on I. And one thing here, V is potential difference across the ends of a conductor. Okay. V equal to R I, where R is proportionality constant and is called resistance of the conductor. Resistance of the conductor is equal to V divided by I. It is defined as the ratio of potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. According to this equation, the SI unit of resistance is volt per ampere. Volt per ampere. Or O. With the help of the same equation, we can derive dimensional formula. You know very well, potential difference is equal to work per unit charge. What are the dimensions of work? M L square T minus 2 divided by, what are the dimensions of charge? A T. Okay. Put the value of V in this equation. It is M L square T minus 2, this one T plus 1. After simplifying, it will become T minus 3 and this will become A minus 1 divided by I. Dimension of I is A. Finally, it becomes M L square T minus 3 A minus 2. It means resistance has one dimension in mass, two dimensions in length, minus 3 dimension in time, minus 2 dimension in current. Okay. अब नेक्स्ट मैं V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं फॉर मेटालिक कंडक्टर. अब ये हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन. क्यों स्ट्रेट लाइन मिल रहा है? क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है potential difference across the
एंड्स ऑफ अ कंडक्टर को, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। अगर ए एंगल थीटा है तो इस V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप यानी कि tan थीटा क्या मिलेगा, अपोजिट साइड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आपको पता है ये रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो यहां पे R लिख दे रहा हूं मैं। तो याद रखना चाहिए V वर्सेस I फॉर अ मेटालिक कंडक्टर ग्राफ का स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा वहां पे, रेजिस्टेंस। अगर समझो यही I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किए तो ए बी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, देखिए ए होगा करंट I डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसका रेसिप्रोकल मिल रहा है। देखिए I बाई V क्या होगा, इक्वल टू 1/r। स्लोप ऑफ I वर्सेस V ग्राफ फॉर मेटालिक कंडक्टर क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अब डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए सेम मेटालिक कंडक्टर के लिए V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं मैं। एक ग्राफ मिल रहा है टेम्परेचर T1 के लिए, एक ग्राफ मिल रहा है टेम्परेचर T2 के लिए। ए एंगल मानो θ1 और ए एंगल मानो θ2। अब देखिए कंपेयर करना चाहिए स्लोप ऑफ दीज टू कर्व्स। तो हमें क्या पता चल रहा है, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन अब क्या होगा, वो R1 यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन tan θ2 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेम इक्वेशन, resistance of the same conductor but at temperature T2। तो यहां पे क्या मिल रहा है, R1 ग्रेटर देन R2। हमको पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा डेफिनेटली। तो इस ग्राफ से हम क्या पता लगा रहे हैं, T1 is greater than T2। ओके, अब मैं नेक्स्ट हाउ दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशंस, उसके बारे में पढ़ रहा हूं।
We know very well resistance directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area of a given conductor. R is equal to rho L by A. Here proportionality constant rho is called resistivity. Of material of the conductor. In other words, specific resistance. If I rearrange this equation, then resistivity becomes R A divided by L. अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है वो सब हमें पता है. अब मैं उस डेफिनेशन को यहाँ पे रिकॉल नहीं करूँगा, लेकिन क्या रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड है? द आंसर इज नो. हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड है एल और ए ऑफ अ कंडक्टर पे, बट नॉट रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है? ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, और इम्प्योरिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड है. ओके, अब यहां से मुझे चाहिए SI यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी. तो देखिए SI यूनिट के लिए रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का मीटर, मीटर बाय मीटर कैंसिल, तो क्या रहा है आंसर? ओम मीटर. ओके, रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस भी निकाल सकते हो. अभी हम R के डायमेंशंस निकाले थे, m L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया का L स्क्वायर, लेंथ का L. तो ये L बाई L कैंसिल हो चुका है यहाँ पे. तो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ रहे हैं? m L क्यूब T माइनस 3 A माइनस 2. These are the dimensions of resistivity. ओके, देखिए अब यहाँ पे R के कुछ अलग अलग फॉर्म्स को लिखना चाहता हूँ मैं. R इक्वल टू राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय L करो, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दिस विल बिकम रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू L. क्या होगा? वैल्यूम ऑफ अ कंडक्टर. दिस इज इक्वल टू, और इसका और एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वैल्यूम. तो वैल्यूम किसके बराबर हो गया? मास अपॉन डेंसिटी. तो वैल्यूम को रिप्लेस करो मास अपॉन डेंसिटी से, तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है. ओके, इसका और एक फॉर्म देखिए, जब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? रो L इंटू ये क्या होगा? VU, यानी कि वैल्यूम डिवाइडेड बाय A इंटू ये क्या होगा? A स्क्वायर होगा. अब नेक्स्ट देखिए,
the concept of stretching of a wire or a conductor. On stretching a wire, length increases, cross-sectional area decreases, and hence resistance also increases. But why? Because resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. On stretching a wire, length increases, cross-sectional area decreases, hence R increases. But volume of a wire remains the same. And hence we can write volume of a wire before stretching equal to volume of a wire after stretching. Nothing but A1 L1 equal to A2 L2. Okay, I will take this expression R equal to rho L square upon VE, as VE any volume of a wire remain the same, I mean constant, and you know resistivity is a proportionality constant for a given conductor, hence R proportional to L square. Okay, or we can write R1 by R2 equal to L1 by L2 whole square. One other equation is that R equal to rho V divided by A square. For a given conductor, resistance remain the same as well volume also, and hence R is inversely proportional to square of cross-sectional area. In other words, if a given wire is having a circular cross section, then its area becomes pi r square. So after substituting a value here, you will get r to the power of 4. R is inversely proportional to r to the power of 4. Now based on this question, I will write one question and we will solve it. Okay, here is a question. What it says, the resistance of a wire is R ohm. Take R1 as R ohm. If it is melted, if a wire is melted and stretched to n times its original length, final length L2 is equal to n times the original length of a wire, then we need to find its new resistance. R2 we need to find. We know very well, on stretching, volume of a wire remains the constant. So therefore, A1 L1 equal to A2 L2. This is equal to, keep A2 as it is. What about L2 here? N L1. So therefore, A1 by A2 equal to L1 equal to L1 get cancelled. What remain here? N. A1 by A2 equal to N. This we need to remember. Okay. Next, we know very well, R is inversely proportional to A square.
Using this equation, I can write R2 by R1 equal to A1 by A2 whole square. This is equal to A1 by A2 is equal to N square as it is. Therefore, R2 equal to N square into R1. The value of R1 is R. The required result is first option, that is